Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rupali Gupta, a small town with big dream. In this video, I'm going to talk about airline interview, especially for the ground staff position. In this video, I'm not going to cover any cabin crew, so may I requested people, if you are watching this video regarding ground staff perspective, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. If I will share any video, you will we get the video and watch, and I'm requesting you will be watch the complete video where you can get the full information regarding this airline regarding the interview. Okay, so I'm not talking about the specific airline. I'm talking about every airline, especially in India, domestic and I'm domestic airline, Indigo Air, SpiceJet, Air India Sets, Air India Express, Akasa, and um, yeah, yes, much more. Okay, so what happened, you see guys, whenever you go for the interview, there's a huge crowd in the sense 300, 400 crowd is all right, but along with that, when you are facing thousands and 1200 candidate, thousand plus candidate. Even when I went for the interview, it was last 2025, the month of November, between November to December. I did not know about the exact month, but I went and it was a huge crowd. It was my first interview in Air India sets. There was more than thousands of people. At that time, there was no assessment. You have to clear the first round and then personal interview, and because of the crowd, they conducted third round. Okay, I will be cover my experience, each and everything in next upcoming video. So in this video, I will talk about airline, which I told you beforehand. So whenever people go for the interview, they're scared about, oh my god, there's a numbers of people came for the interview, thousands of people came for the interview. भाई उनका काम है, वो आएंगे, वो एयरलाइन हायर ही कर रही है कैंडिडेट को, तो आएंगे ही। भंडारा किस लिए होता है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। भाई अगर कहीं लंगर चलता है तो जाहिर सी बात है आएंगे लोग। तो ऐसे इंटरव्यू होता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री अपने आप में ब्रांड है। एयरलाइन इंडस्ट्री इट्स अ ब्रांड, मतलब कि आप यहाँ पे, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ एलएमसी कंपनी, इट इज़ नॉट अ बीपीओ कंपनी, इट इज़ नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज़ अ industry where you can build your career. It is an industry where you can boost your communication, your confidence level, where you can interact to the customer face to face, where you can get the allowance, layover allowance, PF, or the stuff, and each and everything you can get. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी होती हैं। यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, एंड यू हैव टू इम्प्रूव your customer serve. You should be a customer oriented. You must be know how to handle the customer. Doesn't matter you are a fresher or experienced. If your customer service, your customer, you are oriented, customer oriented, and you, the HR notice you are capability to handle the customer, the job is your. अच्छा, आप इस साइकिल को समझो। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट अटेंड करते हैं एक इंटरव्यू। ओके, और उस thousands of candidate में recruiter, HR, they are going to select only 15 to 16 candidate, depend on the requirement. Sometimes they select only 10 to 15, sometimes more than 100 candidate, sometimes 17 to 80, sometimes more than 20 plus, depend on the requirement. Okay, सो क्या, जब हज़ार के हज़ार कैंडिडेट आते हैं तो सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इस साइकोलॉजी को समझो आप पहले। उसमें से 500, टू बी वेरी कैंडिड विथ यू ऑल गाइज, जिसमें से 500 कैंडिडेट के पास दे डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, और दे केम फॉर द फन, दे केम फॉर टेकिंग द एक्सपीरियंस, कि हो गया नहीं तो लेट इट बी। ओके, जिसमें से 30% कैंडिडेट के पास, मतलब दे ट्राई, okay, someone preparing for the cabin crew, and they think like, if I will get selected for the ground staff position in future, I will be in cabin crew in another airline, any reputed airline.
30% तो इसलिए आते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 20% होते हैं, दे genuinely prepared themselves, they genuinely worked on themselves, they improve their personality, communications, and they practice a lot. I'm talking about English. And in 20% में से वही 10 to 15% people they select, और इसमें से 5% people, because of the nervousness, because of the hesitation, it's not mean they don't have a potential, they have, but this is the first time of the interview, वो रिजेक्ट हो जाते हैं. मैं भी कितनी बारी रिजेक्ट हुई हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एयरलाइन, मैंने भी बहुत इंटरव्यू दिए तब जाके मैं एक इंटरव्यू में सेलेक्ट हुई हूँ. अगर मैं नॉर्मल एल एम सी बी पी ओ की बात करूँ, भाई मैं इंटरव्यू देती हूँ वहाँ पे भी मैं रिजेक्ट होती हूँ. एयरलाइन में भी मैंने बहुत इंटरव्यू दिए तब जाके मेरा एक सिलेक्शन हुआ. नाउ डेज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई. The more you practice, the more you become a successful person in your life, especially for the airline. एयरलाइन आपसे कुछ नहीं मांगती. एयरलाइन बस एक चीज़ मांगती है आपसे, कस्टमर ओरिएंटेड माइंडसेट आपका होना चाहिए. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो नॉन स्टॉप होनी चाहिए, और यू हैव टू इम्प्रूव योर ग्रूमिंग स्किल्स. बिकॉज गाइज आई ऑल्सो नोटिस्ड कि कोई भी आ जाता है इंटरव्यू के लिए, बट एयरलाइन इट्स अ ग्लैमरस, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. ग्लैमरस इन द सेंस कि आप यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंपनी, यू आर अ ब्रांड. सो आप कैसे कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे? If you are well groomed and you know how to handle the customer, you already knew about the professionalism, so you can represent the company. अब आप ही well groomed नहीं हो, you don't know how to deal the customer, you don't know how to communicate with the customer, so आप क्या ही कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे नहीं ना. सो दैट काइंड्स ऑफ थिंग इज ऑल्सो नोटिस द HR. ठीक है, HR के लिए कम्युनिकेशन भी ठीक है, मायने रखता है, बट हाउ यू रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन who have well experience, who have experience of customer service, who already worked, or they have very good communication and personalities, oh my god, but the grooming skill is not that much. On the second hand, the people, there is a one candidate, the English is average, they don't have much experience, he and she is a fresher, they represent themselves, they represent them, it's like, oh wow, they are representing the brand. Definitely the HR going to select the second candidate rather than the first candidate. Exactly, they knows each and everything, but they don't know how to represent. आप वेल ग्रूम्ड ही नहीं होगे, आप खुद नहीं वेल ग्रूम्ड हो, आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी को क्या ही करोगे? मैं इस साइकोलॉजी को समझो, अगर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट आए हैं, यू डोंट हैव टू बीट द थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट. योर कॉम्पिटिशन इज नॉट फॉर द थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट, योर कॉम्पिटिशन फॉर योर सेल्फ और नथिंग. बस 500 तो बस ऐसे ही आए हैं, ठीक है, जिसमें से 30% तो डॉक्यूमेंट्स, और ये जिसमें से 20% होते हैं जो पीपल, दे आर लिटरली, दे आर जेन्युइनली want to join the airline industry, they have knowledge about airline industry, they are very passionate to join airline industry. Whenever I went for the interview, when any type of interview, international, domestic, so I will try to know. Whenever I communicate with people, normal chit chat, he was saying I'm already working, I came for the time pass. I try to know even क्या 100 में से 100 कैंडिडेट सेलेक्ट करना है फॉर द HR, इट्स नॉट कप ऑफ टी, इट्स नॉट एयरलाइन. फॉर एवरी BPO LMC कंपनी 100 के 100 कैंडिडेट आए, सबको सेलेक्ट करना. माइट बी some people have the skills, might be rest of the people they don't have a skill. Nowadays the competition for the skills, not your behavior, not is the sorry, now it is the competition of the skills. Just make your own story and sell them, make your own story and sell them, there's nothing. The only game of your communication skills, your line, any company, if you are applying for only there's no communication skill or nothing on how you are representing yourself, that's it. So you have to understand the psychology of thousands of people, and the job will be your. Now I'm also working, I'm a working woman, and on the other hand I'm also preparing for the higher position. I know I'm working in the aviation industry, but I want to secure a position in reputed airline.
I want to be a fly high. I want to secure a very high position. For the securing a high position at the age of the 20 or 21, and you already working in airline industry, and you don't have any much more experience, you have, at least you have to be 2 to 3 year experience. At that time you can think, but if you have potential, you can also think about it. But before securing a position in higher, you have to start today onwards. You have to work on yourself, you have to work on your communication, you have to work your personality, you have to work your English. Can HR looking for the enthusiasm candidate, fresher, with full of enthusiasm, experience with full of confidence, experience candidate with full of customer oriented, दैट काइंड्स ऑफ क्वालिटी HR लुकिंग फॉर. आपका कंपटीशन, ये कभी मत सोचना आपका कंपटीशन 1,000 लोगों से, आपका कंपटीशन खुद से है. ये चीज़ यू हैव टू एक्सेप्ट इट. जब तक मैं मानती थी यू हैव टू बीट थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट, तब तक मैं फेल होती गई. और जब से मैंने मानना स्टार्ट किया यू हैव टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज लाइक दैट, HR think this is a suitable candidate for me, not for the airline or the company. मुझे 1,000 लोग से नहीं मतलब, मुझे अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. इफ HR आस्क्ड यू अबाउट एनी topic such as online versus offline, you have to share your own story, you have to make, you have to create your own story. भाई कहानी बनाओ. you have you must be note about the selling skills. कहानी बना के लोगों को बताओ. यू हैव टू मैनिपुलेट दी HR. जब तक मैं ऐसा करती थी कि ये इससे कॉम्पिटिशन से, तब तक नहीं हुई भाई. मैंने 7 to 8 दिए, बहुत जगह नहीं हो पाया. जब फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट किया, एंड नाउ यू कैन सी, नाउ आई एम अवेयरिंग, आई एम शेयरिंग माई इंफॉर्मेशन, शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू ऑल गाइस. You have to also follow the same strategy. Next time you will be go for interview, you have to follow and comment me what कि हाँ it's a literally work. Okay. Further more information, feel free to reach out, feel free to comment. I will definitely make सेपरेट वीडियो. आपका जो भी कमेंट आएगा मैं ट्राई करूँगी कि उस पर मैं वीडियो बना सकूँ. भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट मैं बनाऊँगी ऐसे कंटिन्यूसली. यू हैव टू सपोर्ट माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज. थैंक यू सो मच. राधे राधे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.